Uh, this was an important topic. We should have covered it previously. It is regarding VTC of your full rectifiers. For halfway we have done, right? और वहां पर भी आपने ये किया, आपने VTC बनाया पहले आइडियल केस का, फिर VTC बनाया किसका, प्रैक्टिकल केस का. And what is the first requirement for the VTC? VTC बनाने से पहले आप क्या करते हैं? आपके पास इनपुट आउटपुट का ग्राफ होना चाहिए, that's for sure. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपके पास वो कंपैरिजन टेबल होना चाहिए. तो सब लोग जाएंगे आपने फुल वेव रेक्टिफायर पे, और वो भी कौन सा, सेंटर टैप वाला फुल वेव रेक्टिफायर. सेंटर टैप वाला फुल रेक्टिफायर, ठीक है. So let's go for the transfer curve, but before that we have to make that small little table. So let's first make that table. क्या करते हैं हम उसमें? We say Vi is the input voltage, D1 is the condition of one diode, D2 is the condition of another diode, and this will be your output, V out. We say that if Vi is less than equal to 0, आपके पास डायग्राम है ना सामने, मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं इसलिए आपको अज्यूम कर रहा हूं कि आपके सामने नोट में है डायग्राम, है ना. देखो Vi है लेस देन 0, इनपुट है आपका लेस देन 0, मतलब ये वाला केस, ठीक. इनपुट आपका लेस देन 0 तो कोई टेंशन नहीं, आपका डायोड एक साइड का ऑफ है, दूसरे साइड का लेकिन ऑन होगा, तो इनपुट है ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में, बिकॉज लेस, ये वाला बाय द वे मेरा Vi है, तो जब मेरा इनपुट है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो आउटपुट भी नेगेटिव ही होगा ना. दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट. हाँ, जोर से क्या, सेंटर टैप, sorry, center tap rectifier. I had to write center tap full wave rectifier. Thanks. So this is center tap full wave rectifier. Here we identify from the figure itself that when Vi is less than 0, that is for this region. We expect that when that diode is on, अगर आपके ज़हन में figure होगी, एक ऊपर है diode, एक नीचे है diode, so either of the two diodes has to be on. So we expect output to be equal to this. Now when Vi is greater than 0, therefore this diode now will be on and the other one will be off. Output is expected to be Vi. Let's make the curve for this. That is the VTC curve. VTC curve बनाएंगे तो when we realize that when my Vi is increasing, say for example from 0, okay, towards the negative region, let this be the starting point. This is the catch actually. यहाँ पे आपने इसको समझा तो समझ गए. I say let this be the starting point, that is 0. Everything is 0. Okay. मैं पहले इस साइकिल के लिए जाऊंगा या उसके लिए जा सकता हूँ, बट लेकिन इसके लिए समझ में थोड़ा आसान होगा. So this Vi is increasing, but in negative direction. Vi is increasing, but in negative direction. That is, if this is my Vi scale and this is my V out scale, I say that Vi is increasing in this direction. Right or wrong? Are you with me? Yes, sir. I will repeat. I say that Vi is increasing in the negative direction. ये 0 है, हम इस पॉइंट पे, कहाँ है, इस पॉइंट पे. Vi बढ़ रहा है, हम ये कह रहे हैं output will be also equal to Vi, rather minus Vi. Output will be equal to minus Vi. अब ये होता, अगर हम कहते output is equal to Vi, तो शायद इस क्वाड्रेंट में आ जाता, लेकिन आपका output Vi का उल्टा है, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो Vi out पॉजिटिव होगा. Do you get my point? So that's why as Vi is increasing, my V out is also increasing. जब ये 5 है, ये भी 5 होगा, तो इनका जो पॉइंट है जहां पे ये मिलेंगे ये पॉइंट होगा. जब ये 10 है, ये भी 10 होगा, इनका जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ होगा. डू यू फॉलो द इक्वेशन? सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं, तुझसे पूछ रहा हूँ.
फिर से जो आप बोल रहे थे और जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद था समझ आना चाहिए हमको। हाँ, so then we'll go there also hopefully. Now इसी तरह अगर मैं अब इस केस के लिए ये समझ आया ना, अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, है सही? क्या इसकी मैं बोलूँ ना V out, this is V out and V out is this. इस केस के लिए मैंने आपको कहा V out will be minus of this, मतलब अगर ये -5 है तो ये +5 होगा, वही हमने किया ना कि कुछ और किया बच्चों। चलो जी हम आगे चलते हैं, अब हम इस पॉइंट पे फिर से आए हैं। Now here I will now see the positive वाला part. Now my VI is increasing in the positive direction, ठीक? But I say that for this case when VI is greater than 0, my V output will be same as VI. This means that for 0 it will be 0, for 5 this also will be, when my VI is 5, this also will be 5, and this is 10, this also will be 10. So when I connect these points, it will be nothing but a straight line or a linear graph. ठीक? Do you get the point? Okay. Now इसको revise करना और इस lecture से भी देखना मेरा बोलने का मकसद क्या था, because आगे जाके VTC is very important and you will have to plot it on your own, and maybe this is important as well. You have to make sure कि अच्छे से समझ आए. चलो क्या बात है? ले लो. Okay, so then we go to the practical wala case now. This for sure is to a VI. Now when we talk about the practical case, what comes into picture? What comes into picture? अरे भाई जब practical case की बात करते हैं, additional चीज आती है ना picture में, क्या? Cut in voltage of the diode. So we have to take consideration of that also, and accordingly conduction angle भी change होता है. ठीक? चला आपने बोर्ड बना हुआ इस बिजनेस का अंदर. ये तो था आइडियल वाला केस. प्रैक्टिकल वाले की बात करें तो we will have to extrapolate these lines over here. Right? So आप कंडक्शन एंगल ये होगा. सही है गलत? सही है ना? खैर मुझे इससे मुझे लिखना कंडक्शन एंगल, लेकिन अब मुझे यहां पे एनालिसिस करनी है. ओके, सो माय एनालिसिस विल चेंज स्लाइटली. समझिए था ना? कच्ची तरह से या कोई भी आ रहा है समझ? मतलब ये बस बैठे. Well, let's go to the practical case. For the practical case, my VI, for the practical case, eyes on board please. Now I am discussing what? The analysis for practical case. For my practical case, my VI less than equal to minus V gamma. That means ये वाला point. Okay. My diode D1 will be off, D2 will be on, and output here now will not be now directly related to VI. एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर के प्रैक्टिकल केस. जरा हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल केस खोलो जल्दी नोट्स में. हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल केस बोला, उसके इस टेबल का लास्ट वाला बॉक्स क्या है? वहां पे क्या लिखा है मैंने? V output will be equal to प्रैक्टिकल वाले केस में है ना, कहां है जरा दिखाओ. प्रैक्टिकल वाले केस में लास्ट वाला बॉक्स प्रैक्टिकल हाफ वेव रेक्टिफायर VTC जब हमने बनाया उसके लिए पहले हमने एक बॉक्स बनाया है ऐसे एनालिसिस बॉक्स हाफ वेव रेक्टिफायर. वहां पे मैंने कहा that V output will be equal to VI, but it will not be exactly equal to VI. It will be equal to say V out dash up here. क्यों? क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल केस है. आइडियल केस में V output was equal to VN, but प्रैक्टिकल केस में एक वोल्टेज जो मैंने आपको कहा ना समझाने के लिए, डायोड कुछ वोल्टेज खाएगा. सो V output कभी भी Vin के बराबर नहीं हो सकता प्रैक्टिकल केस में. सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे VI नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे it will be equal to now say VO dash. लिखा हमने
लिखा हमने ये पॉइंट, दैट इज राइट, ग्राफ मैंने किया था, लेकिन वही तो है ना सिग्निफिकेंस, वो दिखाता है कि वो वी आई के बराबर भी अब नहीं होगा। वीओ डैश लिखो या वी आई डैश लिखो, कुछ भी, मतलब जस्ट टू इंडिकेट इट विल नॉट बी इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू। केस 2 यहां पे आएगा, व्हेन योर input voltage is in the range of greater than V gamma but less than V gamma, greater than minus V gamma but less than or equal to, it is less than or equal to V gamma but greater than minus V gamma। कौन सा वाला रीजन? ये वाला है ना, कि वोल्टेज इस टाइम तो बड़ी है किससे? माइनस वी गामा से, लेकिन वी गामा से कम है। इज इट लॉजिकल? क्या डज इट साउंड लॉजिकल? इट इज डिफिकल्ट, दैट्स ओके, बट इट डज इट साउंड लॉजिकल। लॉजिक मिस नहीं करना, लॉजिक मिस नहीं करना, ठीक है। चलते जाओ आगे। तो कंडीशन क्या होगी? इस टाइम दोनों ही ऑफ होंगे, ये भी ऑफ होगा। क्या सही है गलत है? जब ये वाला रीजन आपके पास है ना, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट भी, सॉरी ये ना सेंटर टैप का सर्किट भी है ना, सर्किट से साथ साथ देखो ये कंडीशन फॉर वोल्टेज, मतलब इन अ वे दोनों डायोड्स, दोनों पाथ जो है वो ऑफ है, ठीक है ना। दोनों पाथ जो है, ना ही पॉजिटिव साइकिल से ऊपर वाला डायोड ऑन हो रहा है, ना ही नेगेटिव साइकिल से नीचे वाला डायोड ऑन हो रहा है। दोनों वोल्टेजेस जो है वो बहुत कम है, ठीक। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव वाले साइड से कैसे नीचे वाला डायोड ऑन होगा? नेगेटिव वाले साइड से नीचे वाला डायोड इसलिए ऑन होगा बिकॉज़ नेगेटिव साइकिल जब आता है तो ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है, नीचे वाला क्या बनता है? समझ आई? नीचे वाला पॉजिटिव बन गया। सो दैट्स हाउ आई कंसीडर दिस। ये माइनस वी गामा क्या चीज है? ये एक्चुअली प्लस वोल्टेज ही है डायोड के लिए, लेकिन वेव फॉर्म के हिसाब से ये जब इस वैल्यू को क्रॉस करेगा, क्योंकि जब ये इस वैल्यू को क्रॉस करेगा ऊपर तो नेगेटिव वैल्यू होगा, सपोज गामा से ज्यादा या 0.7 से ज्यादा, लेकिन नीचे उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। दैट्स व्हाई दिस वी गामा। ये आपको अहम पॉइंट समझाना, ठीक है। सो नाउ वी कैन गो बैक। नाउ द लास्ट वन ओवर हियर इज your VI is greater than equal to V gamma. This diode will be on and the other will be off. The output, by the way, the output in this case will be 0, right? And the output for this will be, say, VO double dash. Any output, we have to calculate that value. It cannot be straight away set. Now the final thing, that is the VTC. VTC. अब हमें पता चल गया obviously this is minus, this VO dash will be minus value of V, है ना? वो तो सेम रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा, जस्ट वो पॉइंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट प्रीवियस ग्राफ में ये था, लेकिन अब ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए पहले हम एक इसको देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल को देखें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को। नेगेटिव हाफ साइकिल को देखें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखें? पॉजिटिव को देखें। ओके, सो ओके, वी आर हियर एट पॉइंट 0। So this is a practical case, and we say that output है ना ये, we say eyes on board please. Since this is a practical case, and we say that when your VI is less than V gamma, when your VI is less than V gamma, this case, which one? No, let's come here. Let's come. When your VI is less than V gamma, your output is continuously 0. क्या सही? Your output is continuously 0. कब तक? जब तक V in जो है, या आपकी V in वाली लाइन है ना, या आपकी V out वाली एक्सेस है, जब तक आपका V in जो है V गामा को क्रॉस न कर जाए, तब तक आउटपुट क्या रहेगा?
जीरो। क्या है सही है गलत है? ग्राफ के हिसाब से भी फिर से देखिए, आपका V in है लेस देन V गामा, दैट इज इन दिस रीजन, आपका आउटपुट कंप्लीटली जीरो है। सही है? तो वही मैं प्लॉट कर रहा हूं, जब तक V गामा तक नहीं इनपुट जाएगा ये जीरो आएगा। अब यूं ही आपका इनपुट V गामा को क्रॉस कर रहा है, आप ये देख पा रहे हो सीधा सीधा दैट आउटपुट इज सेम दैट ऑफ इनपुट, सो आई वुड से वी विल हैव अ लीनियर ग्राफ फ्रॉम हियर ऑन। गलत है सही है? सही है ना, क्योंकि V गामा के बाद इसको फॉलो करेगा। सही है? नाउ लेट्स गो टू द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में भी वही कहानी है, जब तक इस पॉइंट पे आइए, देखिए अगर ये वाला ये सेंटर पॉइंट है, जब तक आपका इनपुट माइनस V गामा को क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट इज ये वाले रीजन में, आपका आउटपुट भी जीरो है। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? सो लाइकवाइज फॉर दिस साइड, व्हेन यूर ये आपका V गामा है, जब तक आपका माइनस V गामा, जब तक आपका VI V गामा से नेगेटिव रीजन में बढ़ नहीं रहा है, तब तक इनपुट जीरो, उसके बाद एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन और रिलेट दिस टू दिस। जो ये वाला रीजन है VI greater than V gamma and VI less than V gamma, that is this one, VI greater than V gamma and VI less than V gamma, region 3 rather region 2 इसको हम कहेंगे। तो R2 के अंदर आपका आउटपुट जो है वो जीरो है, that is maintained, whereas when your VI is less than V gamma, your output is VO dash, when VI is greater than V gamma it is VO double dash, which will depend upon the other components। लेकिन उस पे मैंने आपको लिया नहीं, बिकॉज वहां पे बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह आएंगे, उतना वहां हमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन VTC समझ आया? सो VTC आप इन दोनों को देख के अच्छे से बनाएंगे, वेवफॉर्म से प्लस एनालिसिस जो आपको मिल रही है, एंड देन योर VTC शुड फॉलो दिस आल्सो। ये आवाज समझ? ठीक है? क्योंकि आई कुड सी दैट आपने असाइनमेंट तो बनाया था, लेकिन आपने बस ग्राफ बनाया था। मकसद ये नहीं है कि आप ग्राफ बनाओ, यू हैड मिस्टेकन हियर। सुना जरा, सो मकसद ये नहीं कि आप बस ग्राफ बनाएं, है ना, मकसद ये है कि आप उसको समझ के बनाएं। इसीलिए असाइनमेंट इतना छोटा होता है, क्योंकि मेरा मकसद है अगर आप 4 लाइनें भी लिखे असाइनमेंट, वो समझ के लिखे और आपको ये वहीं पे याद ही हो जाए एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है इंजीनियरिंग में। आप हर एक सब्जेक्ट को एग्जाम के टाइम अलग अलग टाइम में, बहुत बेहतर है ये कि आप उसको क्लास में ही प्रिपेयर करें। लिटरली आई मीन इट, क्लास में ही प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम के दिन आपको रिवाइज करना हो, वो हो जाएगा। और हमने जब एग्जाम दिए हैं, हमने एक दिन में 2 पेपर दिए हैं, और वही अच्छा तरीका था, क्योंकि उससे हमें क्लियर था हमें एग्जाम के टाइम कोई वक्त नहीं है पढ़ने का, हमें क्या करना है अभी क्लास में ही या क्लास के बाद ही इस हफ्ते में इसको खत्म करना है और दिमाग को फ्री करना है। ठीक है? सेम अप्लाइज टू एनीवेज। इसके बाद हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर था, उसका ऑब्वियसली जो VTC आएगा किसके लिए, नॉर्मल आइडियल केस के लिए वो तो सेम आएगा, बस एक छोटी सी चेंज है उस केस के लिए, ये आप बना लीजिएगा। VTC for bridge rectifier, ideal case will be same that as VTC of a ideal case of center tap Fourier rectifier. Now if I say this is VTC of what? VTC of center tap, practical case. If I make VTC of bridge rectifier, practical case, just one change over here, यहाँ पे VM की जगह आ जाएगा 2VM, sorry 2V gamma, because we have 2 diodes in series. We have 2 diodes in series. क्योंकि अब इसको बस एक के गामा को नहीं ओवरकम करना पड़ेगा, 2 के कट इन वोल्टेज को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है ना? Is that right? जिस तरह रेजिस्टेंस इन सीरीज ऐड अप, इसी तरह 2 diodes will actually add up the value of crossing the potential, that is V gamma जो हमें ज्यादा, यही बस एक छोटी चेंज है, बाकी सारा सेम है। ओके, टाइम लेफ्ट इज हाउ मच? हाँ, 12 minutes।
अच्छा. Is it done? Any question on this? Any question on this? Okay. There are many, I know, but they are more of like confusions than questions. That's why you said no question. But there are many confusions, I know, and they will be solved only once you sit down at home or somewhere and draw this graph bit by your own hand. Understanding ये graph आया तो आया कहाँ से? मैंने तो आपको समझा दिया. ज़हन में ये dots रह गए, लेकिन they are not connected. It is who you have to correct. Anyways, coming back. Heading है comparison between half wave rectifier, center tap, full wave rectifier, bridge rectifier. यहां से हम पैरामीटर्स लिखेंगे. First point, DC output voltage. This again is an important point to be considered. DC output voltage is Vm by pi. For this case it is twice Vm by pi, and it is same here. Then RMS output voltage here is V is given by Vm by 2. Here it is given by Vm by root 2, and here it is same as this. Is that okay? Then we go to the next one, that is the ripple factor. Here it was 1.211, if you remember. Here it is 0.482, and here it is same. Neta. What is neta? Rectifier efficiency. Pura. Rectifier efficiency. Neta. Here is 40.53%. Here it is 81.06%. Now there can be slight difference in the values, that is just okay. Then we have TUF. What is TUF? एक मिनट, आप बताइए what is TUF? Stand up please. Stand up please. What is TUF? बैठ पाओ ना? क्या? शाबाश. फिर आगे. ठीक बोल रहे हो, जोर से बोलो बस. बोलो ठीक बोल रहे हो, जोर से बस बोलो. हाँ, है ना? ठीक बोल रहे हो, बोलो ना ठीक बोल रहे हो. शाबाश. हाँ? नहीं, आप तो बोल रहे हो. I can hear you. खड़े रहो पूरी क्लास में. शाबाश. क्या है TUF? One second. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Okay, if you choose to stand for the whole class, your choice.
Your voice should be so high that you should interrupt my lecture and I should be able to hear you. Very right. Sit down. Good. Okay. What is PIV? आप बताओ. आपने बोला एब्सेंट होगा. वो आ रही है मत करो. कम. बेटा ये लास्ट क्लास का नहीं है. ये आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब का है. बोलो. उधर क्या वाला में उसका डिस्कस हो रहा है. What is PIV? इतना मत नेग्लिजेंट करो. तो फिर क्या है? दिमाग को भी जोर दो ना. This is there in your brain. That's why I said it is there. But by default answer आपका है मैं नहीं आया था. ये अच्छी बात नहीं. This is escapism. Don't escape. Face the situation. This will harm you. Ripple frequency यहाँ पे F है, यहाँ पे 2F है, and यहाँ पे B2F है, so I'll just mark it like this. F is the input frequency actually, so we relate it with the input frequency F. How much time is left? The exact बताओ. 6 minutes. Okay, we'll stop there. Don't think that whenever you say 6 or 7, I will anyway continue 7 is too much, but I actually evaluate कि जो topic है वो क्या इन 8 मिनट में 15 मिनट में खत्म होगा कि नहीं होगा. If it's 10 minutes sometime, you can still stop, maybe. Rarely though, but maybe. So sincerity is the key. Anyways, we'll stop here and we'll mark the attendance.